Welcome, Kavi. We need to wait for 2 to 3 more minutes. Let other people also join in, and then we will begin the session. Welcome, Adi. Good afternoon. Hello, Neil. Hello, Adi. Hello, Kavi. Hello, Kashish. Hello. Hi. Just Hello. 2 more minutes, and then I think we will start our session. Welcome, Saklen. Good evening, sir. Good evening. I think we should start now. So today's session is about like your IELTS exam form filling. There are many things that people face difficulty during the during filing for their IELTS exam. So there are 2 to 3 methods. You can do it online, you can do it offline, and also online maybe you can do it by yourself, or you can take the help of an expert to fill your IELTS form. Fees currently is 16,250 rupees, जो डे आफ्टर टुमारो दैट इज फ्रॉम मंडे 17,000 रुपीज होने वाली है, राइट? सो एक पूरा प्रोसेस होता है. मेक श्योर कि आप अपने एंड से जब भी भरे यू डू नॉट डू मिस्टेक्स, बिकॉज आइएलटीएस से अपनी चीजों को ठीक कराना, करेक्ट डेट सेलेक्ट करना थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लमेटिक है, थोड़े इश्यूज आते हैं. हमने एक डॉट भी अगर गलत लगाया है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता. इवन राइटिंग आवर नेम वी शुड बी वेरी केयरफुल. आइल्स के एग्जाम के लिए आपको जब फॉर्म फिल करेंगे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट इज योर पासपोर्ट, राइट? अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ पासपोर्ट कैन नॉट अपीयर इन द आइल्स एग्जाम. सो आई बिलीव यहाँ पे सबके पास पासपोर्ट है, एंड पासपोर्ट ही एक डॉक्यूमेंट है जो हमें चाहिए होगा आइल्स के एग्जाम फिल के लिए, राइट? एंड आइल्स की फीस आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई. इवन सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. तो मैं आज लाइक इन द लाइव सेशन टुडे इटसेल्फ मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा पूरे एक एग्जाम, कैसे एग्जाम का फॉर्म करा जाता है, और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें आंसर करने होते हैं, राइट? आइल्स के फॉर्म में एक चीज और ध्यान रखिएगा, लाइक जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सिर्फ फर्स्ट नेम होता है और बाकी का सरनेम नहीं होता.
तो आइल्स की जो वेबसाइट होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। फॉर दोज हु डज नॉट हैव अ सरनेम वो डॉट लगा सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, दो चीजें बहुत ध्यान से करना, एक अपना मोबाइल नंबर और एक अपना ईमेल आईडी, बिकॉज आइल्स आपसे कभी भी अ, और कोई तरीका नहीं होगा जिससे वो कनेक्ट करेगा। वो आपके मोबाइल पे मैसेजेस करेगा या ईमेल पे मेल्स करेगा। इसके अलावा देर इज नो अदर वे। आप कस्टमर पे अगर चाह के कॉल करके भी अपनी चीजें उनको बताते हैं, देन अगेन वो जो नंबर मेंशन्ड होगा और जो ईमेल आईडी मेंशन्ड होगी उसी पे वर्क करेंगे। और अगर आपकी गलती से भी गलत ईमेल आईडी चली गई तो उसको ठीक कराना इज अ बिग टास्क, राइट। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ, एंड फिर हम उस पर स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरी प्रेजेंटेशन देख लेंगे एंड इन द एंड मैं आपको पूरा फिल करके दिखाऊंगा एक फॉर्म। अगर किसी ने पहले फिल किया है या कोई भी इसको इश्यू आए हैं फिल करने में कोशिश की है, तो मेरे से वो क्लास में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, राइट। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ। Okay. I hope my screen is visible to you all. So today is our 10th session and it is related to how to fill IELTS form 2024, right? This is a live session that will help you out in filling the form, IELTS exam form, and also how to pay the fees, right? So everyone knows what is IELTS. It is a globally recognized English proficiency test. It is designed for individuals who wish to study, work, or migrate to countries where English is the native language of communication, such as UK, Australia, Canada, New Zealand, Singapore, USA. It assesses your all four language skills. Those are listening, reading, writing, and speaking. And if you have to plan to study in a foreign university or you're looking for work, migration, or immigration, then IELTS is required. IELTS is required not just by universities, but also during your visa process, you need to show the IELTS band, right? So IELTS is conducted over 1400 locations across the globe and it is accessible to candidates worldwide. There are two versions of IELTS, which we have already discussed in our previous sessions, that academic and journal. And academic is for students and journal is for looking for work or immigration. Now, so what are the options you get while selecting an IELTS test? पहले तो सबको क्लियर है ना, IELTS का टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड भी होता है एंड पेपर बेस्ड भी होता है, राइट। एंड अगेन जो पेपर बेस्ड होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स होता है, जबकि कंप्यूटर बेस्ड बहुत बारी एग्जाम होता है। सो फर्स्टली यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि कौन सा एग्जाम हमें चूज करना है, हमें कौन से एग्जाम के लिए अपीयर होना है। ऑल्दो सब कुछ सेम है, मार्किंग पैटर्न तक सेम है, बस द डिफरेंस इज पेन एंड पेपर बेस्ड आप एक नोटपैड पे करते हैं, जबकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप स्क्रीन पर देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, राइट। सो द सिंपल प्रोसेस इज यू नीड टू चूज द राइट टेस्ट and you need to choose whether you are going for what is the purpose of your taking the IELTS, whether you are going to take academic IELTS or general training IELTS. Then in whichever city you are, there are certain test centers that are nearby your place, so you need to locate a test center near you. The IELTS is available at various locations worldwide. You need to select a test date. You can check the available dates in the website itself and select one that suits you. Now, after selecting that, you need to fill out the application form. And this can be like the most general form of people who are appealing for IELTS generally fill out the form on online, like on the official IELTS website. Then they will ask you for documents. So you need to present a passport, right? And in the end, you need to pay the test fee and then you get the confirmation from the test center that you have successfully registered for your IELTS exam. And the last is preparation. So once you registered, you should start preparing for yourself. And within the time frame you have, you need to practice a lot of sessions of listening, writing, reading, and speaking. राइट, सो व्हाट डज एन अर्ली रजिस्ट्रेशन डू? हम जल्दी फॉर्म क्यों भरें, एग्जाम के टाइम पे क्यों ना भरें? सो द थिंग्स आर, आइल्ट्स का एग्जाम ना बहुत लोग दे रहे हैं,
there are number of people who wants to appear for the IELTS for the upcoming months, and ऐसे ही चलेगा, even numbers increase होंगे, it is not going to decrease. So there is a limited number of seats on a particular test date. So as soon as you are planning to give IELTS, you should at first fill your exam. What will this do? It will secure your spot. Early registration ensures that you get a test date and location that are convenient for you. Like हमारा प्लान है, हमने सितंबर में जाना है ना, हम आइल्स की प्रिपरेशन करने लग गए एंड हमने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, एंड सडनली मार्च में हमें लगता है हमारी प्रिपरेशन हो गई है, नाउ वी शुड अपियर फॉर द एग्जाम, एंड हम एग्जाम फॉर्म भरने गए, एंड सडनली यू रियलाइज कि अगले नेक्स्ट 2 मंथ्स की डेट्स तो हमारे पास है ही नहीं, वो फिल हो चुकी हैं, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट? वी हैव टू वेट फॉर जून के एग्जाम, अब हम जून पे ही दे पाएंगे, देयर इज नो कोटा और एनीथिंग इन द आइल्स एग्जाम. So secure your spot as soon as you start preparing for your IELTS. And once you have the date in hand, you can start your preparation journey, right? And again, if you have book your spot early on, you can go through the terms and conditions that are required for the test, and you can prepare yourself well. So like I told you, there are two main forms of registration. One is online, the other one is offline, that is in-person registration. And there is also a offer of registration via post, but more than 95% of the people are generally registering themselves through the online, because this is a digital world and we all have the smartphones in our hand, and it is very easy and imperative to fill the IELTS exam by ourselves. Anyone if has any problem, any question related to the IELTS form filling or anything, feel free to ask me, right? So they will ask for valid identification. You need to present a valid passport for in order to fill the IELTS exam, and you need to carry that passport during your test date. So the name and details that you fill on the registration form during the online or offline process should be matching whatever, exactly the same as it is mentioned in the passport. The same ID must be presented on the test day. So you need to understand the test types and requirement. So first of all, you need to decide whether you are appearing for academic or journal, and understand the purpose of your test and choose accordingly. If you have any special needs, like there are many things that can happen simultaneously, accidentally. So if anything has happened, you need to inform the IELTS test center prior, and they will make arrangements for you. So you need to have a valid email address is very necessary, especially for online registration, as all communication will be through email. वो आपको कभी कॉल नहीं करेंगे, कभी आपसे इन पर्सन कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, they will only contact you through mails. So whatever the information you are filling in the exam registration form, please make sure it is pinpoint correct, right? And you can, once you have filled the exam, you should be aware about the preparation materials. You should prepare yourself well, because the exam is not that cheap, and also the exam holds your dreams, your career, and your goals. So this is the basic information. Once we will start filling the form right now after this presentation, I will tell you each and every detail what we need to fill. So there is a upload facility during online while filling the exam. Make sure that your image or the scanned copy of passport is not more than 1 MB. So that is the limit. You need to have a high quality photograph, but you need to cut it short and upload it to the website. So there are many methods in order to pay. You can pay through debit card, credit card, you can use a scanner if possible. And you need to check everything before doing anything. Like you need to follow specific instructions, like each test center might have slightly different requirements. Always check the specific instructions provided by the center where you are registering. Use a scanner if possible for identification documents. A scanner usually gives a clearer image than a photograph.
right? Rather than clicking a photograph from your camera, you can use a scanner. Check the image before uploading. Ensure the image is clear and all required details are visible and legible. उसमें ऑप्शन होता है कि आपको फर्स्ट पेज कहाँ पे अपलोड करना है, लास्ट पेज कहाँ पे अपलोड करना है. मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि फर्स्ट पेज की जगह पे लास्ट पेज अपलोड कर दें, लास्ट पेज की जगह पे फर्स्ट पेज अपलोड कर दें. सो इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस. So keep digital copies of the documents you have uploaded in case there are any issues or you need them for reference later. Sometimes what happen is we upload the photo, but due to anything वो photo clearly सामने वाले तक नहीं पहुंच पाती, टेस्ट सेंटर तक नहीं पहुंच पाती. So you need to carry a photocopy of the document that are asked in the registration form along with you during your test date. And be mindful of deadlines. Make sure कि उसमें एक टाइम मेंशन होता है जब आपने एग्जाम के टेस्ट लिए, लाइक योर एग्जाम इज फ्रॉम 1 to 4 इन द आफ्टरनून, बट उसमें क्लियरली मेंशन होगा आपकी मेल में दैट यू हैव टू रीच द टेस्ट सेंटर एट 11:30 बिकॉज even IELTS also test center also takes time to validate you, to check whether you are the correct person, you are the right person that has to appear for the exam or not. So please keep in mind your deadlines, your time scheduling, and everything. Plan everything in advance. Like if you are traveling to some other city and suddenly something happens during your journey. So if you miss the exam, there is no listening. They are not going to listen to you or any excuse. You should be there at the center at the time mentioned. So for choosing a suitable date, you should consider a preparation time, like you require 2 months, 1 month. Check application deadlines, but when you are going to apply for your university or college, frequency of test dates. In the website, it is clearly mentioned that which dates are available, and you need to register as early as possible because in order to book your slot. And popular test dates can fill very quickly. Like for September, most of the dates in February and March are already like more than half of the seats are filled. So do not wait for longer period. Just if it is in your mind that you need to appear for the IELTS, register yourself for the IELTS test and then start preparing. So in order to find your test center, you can use the official IELTS website, and even in the mail, they will tell you which test center you have to appear for the exam. Like IELTS का एग्जाम किसी स्कूल्स में नहीं होता है, कॉलेजेस में नहीं होता है. जनरली एक 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, right? And you can contact test centers if you have any question or need any information related to the same. You can directly contact the test center. You can visit the test center in prior also if it's feasible. If it is near to your place, you can visit the test center. And the last point is you need to consider test reviews as well. So sometimes online forums or text taker reviews can provide insights into specific test centers. So you need to always have a plan B. There are peak seasons for IELTS. Be aware of peak testing times like just before university application deadlines, as availability might be limited. And you need to have a plan B, have a second choice date for the test date or center in case your first choice is not available. So you should prepare well in advance for the same. Fee structure of IELTS is at current, IELTS is charging 16,250 rupees for academic and general. For IELTS academic UKVI, the fees is different. It is slightly higher than that of IELTS. And again, there are other things like EOR, inquiry on result, and one skill retake program. And the fee structure of those exams varies depending on your module, depending on your location, depending on many things. And there are additional charges if you are preponing or postponing your exam as well. What are the payment options? You can pay it through credit card, debit card. You can do a bank transfer. You can do a cash payment, and there are other methods like UPI, PayPal. Everything is available. So you need to always make payments through the official IELTS registration site or an authorized test center's website. Like WorldEdX is an authorized test center participant of IELTS. You can book your seat with us, and we will also enlighten you with certain rewards as well.
You should never share your credit card, debit card details via email to anyone until and unless you are sure that the other person is authentic. As soon as you make the payment on the IELTS website, you will get a receipt for the same, and similarly within an half hour you will get an confirmation on your mobile phone on the number you have given during your registration process, and also on your email ID. You can also check bank statements for the payments that are being done, and you can contact test center if you have not received any message or email regarding the same, and if you believe you have done the payment successfully. So there are certain special accommodations that are also provided by the IELTS test centers. For example, if you have visual difficulties, you can use enlarged print or braille test papers, braille devices for the speaking test. Even if you have hearing difficulties, lip reading version of the listening test, special amplification equipment, or a sign language interpreter. If you are speaking or writing difficulty, you can get extra time for the writing test, use of a scribe or alternative speaking arrangements. Similarly, if you have other disabilities, like if you need a wheelchair or if you need a adjustable desk or chair, rest break for medical conditions, everything IELTS will take care of it. But you have to inform the test center prior, not on the day of exam, because only then they will be able to make arrangements for you. Now, process for requesting accommodations, you need to apply early. You need to contact the test center. You need to get the confirmation that yes, you have applied for the exam. You need to provide your medical evidence. You need to again you have to submit the request, and then they will give you the time, and they will let you know on what date you can appear for the exam. So there are additional tips like all personal and medical information provided will be handled confidentially. There is no additional cost for arranging these things. And once the accommodations are confirmed, familiarize yourself with them, especially if it involves using special equipment or a different format of the test. So you should practice accordingly, whatever you are demanding them to do for you. And only then you can appear for the exam in the best possible way. What are the frequent errors that we generally do is like we can sometimes put incorrect in personal information, we can make mistakes in contact information, we can choose the wrong test module, errors in payment, not understanding the test format, ignoring test center locations and dates. सपोज आपको आइल्स का एकेडमिक एग्जाम देना है, आपको स्टडी के लिए बाहर जाना है और आपने गलती से आइल्स का जर्नल फिल कर दिया, नाउ व्हाट विल यू डू, राइट? जब भी आप एग्जाम खुद से भरें, प्लीज मेक श्योर कि 100% आप पिन पॉइंट है, बिकॉज अदरवाइज इसका कोई भी सुनने वाला नहीं होगा आपका, राइट? what you can do, you can take the help of WorldEdX आपका एग्जाम फिल कर देगा, and WorldEdX मेक श्योर करेगा कि आप कोई गलती ना करें. फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है, if by mistake you provide some wrong information or anything that you want to change, like a mobile number, जैसे हमने एग्जाम फॉर्म भर दिया, हमारा मोबाइल चोरी हो गया सडनली और हमसे वो सिम नहीं निकल रहा है, राइट? हम स्टक हो गए. नाउ व्हाट टू डू? बिकॉज आईएलटीएस उसी नंबर पे कांटेक्ट करेगा. देन वर्ल्ड कैन be a really safeguard for you, right? WorldEdX is a partner of IELTS, official IELTS, and from our end, we can request and get those things updated. So we can help you in many ways, right? So at the end of the registration form, it will ask you to double check every information. You need to reread it. I know it is a boring work, but many of you sometimes just do not revise your things, and that is a habit. But again, you should not do that. You should understand the modules, what you are appearing for. You should verify your payment details. You should know the test format you have prepared for, consider test locations and date. Read every instruction carefully. And also you need to keep the record of everything. So that is how I fill the IELTS exam form. And I'm after a few minutes, I'm going to show you how to fill the form, right? So if you have any question till now, you can ask me, and otherwise I'll proceed further and will show you how to fill the exam form.
सबको क्लियर हुआ कि क्या क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं IELTS के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए? एनीवन? क्लियर है सबको? तो वो स्टार्ट करते हैं हम। लाइक IELTS एग्जाम फॉर्म मैं लाइव आपको भर के दिखाता हूँ, है ना? इफ समवन हैज ऑलरेडी फिल्ड आउट हिज फॉर्म, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है मेरे साथ। एंड अगर बाकी सबको भी भरना है तो प्लीज सी कैसे एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, एंड अकॉर्डिंगली डू नॉट मेक मिस्टेक्स, डू नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक्स, एंड बहुत इजीली आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, राइट? ओके, सो now if you have any question till now, please feel free to ask, otherwise I'll proceed further. All right then. So this is the official website of the IELTS. IDP IELTS is the body that is like governing the IELTS for India. Earlier it was British Council as well, but now only IDP IELTS is the one company who is responsible for conducting your IELTS exam. So in order to fill, this is the page you are going to come up first when you will be selecting things for your IELTS exam, right? सबसे पहली चीज, सबसे important चीज, which exam you need to appear for. That is whether you are going for computer delivered IELTS, you are appearing for computer delivered IELTS for UKVI, you are going for pen and paper based IELTS, you are going for pen and paper based IELTS for UKVI, or you are going for life skill exam. Suppose we need to appear for pen and paper based IELTS, so I'll be selecting that option. Now, there are two modules for pen and paper based IELTS. One is IELTS Academic, the other is IELTS Journal. So, assuming that you all are students, so I'm going to fill out the IELTS Academic exam. And now, so these are the cities in our country, India. It is more than 75 cities in which you can appear for this exam. Since I belong to Kanpur, Uttar Pradesh, so the nearby city to my town is Lucknow or New Delhi. So I'll be selecting Lucknow for filling out my IELTS exam, right? So now I have opted for pen and paper based IELTS. I have opted for academic IELTS, and the city that I chose is Lucknow because we do not have exam in Kanpur. So that's why I have chosen the nearest city to my town, that is Lucknow. So now I'm going to click on the book now. So these are the dates. Let me see, something is wrong. Let me refresh it again. Pen and paper based IELTS, test module is academic, and the city which I'm selecting is Lucknow. Okay, so pen and paper based, we have an exam on 27th of January. Then on in February, we have the exam on 3rd of February, 17th of February, and 24th of February in the month of February in Lucknow. And then in March, we have 9th of March, 16th of March, and 23rd of March in Lucknow. And then again, like in every month in Lucknow, the IELTS exam for paper based is happening thrice, right? 3 times a month, I can appear for the IELTS exam. Similarly, if I'm going for IELTS on computer, so see, you can see there are a number of dates. The exam is on 25th, the exam, I can schedule my exam on 27th as well, can schedule on 28, 29. Similarly, for the month of February, I can schedule my exam any date I wish to. So the IELTS on computer is happening thrice in one day, while the IELTS paper-based exam is happening 3 or 4 times in a month. That is it. So the frequency, if you see, the IELTS on computer exam is happening on regular basis, but paper-based IELTS is limited. So, and that is my like suggestion to you all,
that you should appear for paper based IELTS because it is very difficult to write 400 words in 1 hour for writing exam. And IELTS में सब modules में अलग अलग हमें clear करना होता है, right? Suppose I am appearing for the 17th February exam, so I am going to select 17th February, right? And this shows that the date is available for me for the exam. And now the information is test date is 17 February 2024. Test type is academic. My test is pen and paper based IELTS, and the price that I need to pay is 16,250 rupees. So these are the basic details that you need to understand before filling out the form. अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी गलत हो जाती है तो believe me, it is a big task to get these things changed. Right now, I'm going to click on book now. So then the IELTS official website will ask me for my personal details. Okay, so there are like 6 steps. Number 1 is personal detail, then registration details, then document upload, then RO details, then review, and in the last we need to do the payment. So at first, what are my personal details? So the title is, my name is Ramandeep Singh, so I'll write Mr. My first name is Ramandeep and my last name is Singh. So this is the official email ID of WorldEdX. As we, like I already told you, we are the partner of IDP IELTS, and that's why our email is already mentioned. If there is any issue during my registration process, if I face any difficulty, IELTS is going to help me. So here I'm going to write my number. Like suppose this is not my correct number. I'm just mentioning a 10-digit number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I believe these are 10 numbers, right? So my passport number is again a 7-digit number. My passport is valid till, you need to have a valid passport. That's why I told you June 2027, suppose. Third. And my date of birth is, I'm born in 90s. Any date of birth, right? I've selected 11th of January 1990, right? So make sure you fill out these, like all these, your personal details absolutely correctly, because it becomes very difficult to change these. Right. Now the question is, do you have a permanent disability such as a visual, hearing or specific learning difficulty which requires special arrangements, for example, modified material, extra time, use of technology? जो मैंने अभी आपको PPT में तो बताया था ना, like if you have any disability, you can let the IELTS center know and they will make arrangements for you. So I don't have any disability, that is why I have written no. If I would have clicked on yes, उसने मेरे लिए बॉक्स खोल दिया होता और मेरे को उसमें अपनी डिसेबिलिटी बतानी पड़ती, एंड अगेन लेटर ऑन मेरे को उसका मेडिकल प्रूफ भी देना पड़ता, राइट? सो आई डोंट हैव एनी डिफिकल्टी, इसलिए I'm writing at no. So I need to click on this. I confirm that I have read and agreed to the terms and conditions and privacy policies. Privacy policy and terms and conditions जो मैंने आपको बताया था, आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पुल करोगे तो आइल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एंड एग्जाम कैंसिलेशन के लिए भी अगेन यू हैव टू, लाइक 15 डेज प्रायर आपके टेस्ट डेट से आप तभी कैंसिल कर सकते हो. बिटवीन 15 डेज आप कैंसिल नहीं कर पाओगे अपना एग्जाम, right? And the next option is up to you whether you want to receive or not. So if you want to click, you can, otherwise there's no need, right? So it is saying you cannot enter a registered email ID. So I'm going to write my email ID. Right? Let's see now what the website says. Sorry. So now my personal details are with the official IELTS website. Now I need to register on what I need to register. You can see the test date. It is 17th Feb 2024. Test city is Lucknow. Module is academic. I have given the passport detail. I have given the mobile number. Now I need to write down the confirm email option. Copy paste nahi ho raha hai, so you have to write it down manually.
I need to again confirm my phone number 8912345678. And again, if you have any alternate number, you can write it down 9812345678. Right. So this is the address. That is the WorldEdX official address. We have already mentioned it. So my city is Kanpur. My state is Uttar Pradesh. My state is Uttar Pradesh, and let the pin code be right. So you need to fill out everything. कुछ भी आप गलत नहीं भरेंगे और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं. Our country is India. Our code is 089. So since I am an Indian, my native language is Hindi. I'm also good at Punjabi, but I'm going to write Hindi as my first language. So what is the occupation center? Like I'm working in the field of education. And if you are students, you can also write education. If you are not in the any of the occupations given there, you can just click on the other and then you need to specify what other occupation you are in. What is your occupation level, whether you are working for someone, whether you are at senior level, junior level, are you a student, whatever. So I will say employ a senior level, right? Why are you taking the test? So now it is up to you. You have to give them a reason. Why are you appearing for IELTS? If you are going for studies, you can write for higher education extended course. If you are going for immigration, like if you are applying for immigration to other country, you can register there for immigration, for registration as a doctor, for other education purposes, for employment, whatever is your reason, you need to mention it. Like suppose I'm going for studies, I'm going for my another professional degree, so I will write it for higher education extended course that is 3 months or more. Any course that is more than 3 months, I need to write. If there are other reasons, I can mention it here. Now, which country are you applying or intending to go? Like my dream is to visit Canada or Australia, so I'm going to write Australia. Whatever your dream country is, you need to mention that. एंड ऐसा नहीं होता कि आपने ऑस्ट्रेलिया भरी है, आपने आइल्स दे दिया एंड सडनली योर प्लान चेंज, आपको कनाडा जाना है तो वो आइल्स बेकार हो जाएगा. आप वेदर आप किसी भी कंट्री के लिए भरो, किसी भी कंट्री के लिए फिल करो, है ना. आप आइल्स का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 2 साल के लिए वैलिड होगा. आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ वेबसाइट पे भर दिया, इट इज फाइन. और मेरा प्लान 6 महीने बाद चेंज हुआ था कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, सो आई कैन अप्लाई फॉर कनाडा एज वेल. सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भर दिया तो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए आइल्स है. आइल्स में जो टीआरएफ मिलता है, टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, उसमें कहीं मेंशन नहीं होता है कि आपने किस कंट्री के लिए अप्लाई किया था, राइट. व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड टिल 10th or intermediate or some other courses, degree, or whether you are bachelor's or master's. If you have done master's, you can write postgraduate, right? How many years have you been studying English? I have been studying English since my birth, from class 1 to 12th also. So I will write 9 years or more. Whatever you believe correct for you, you can mention that, right? I need to submit it again. So now it will ask you for documents. That is your upload first page of your passport, then you need to upload last page of your passport with the address that contains the address. If you are going to make any declaration regarding your disability, you need to upload that. If you are paying online or through postal, you need to upload that payment slip. And if you are not doing that, then you need to just upload your passport and then you can upload it, and otherwise you can skip it. For the timing, I'm not uploading my passport, so I'm going to skip this section. Okay, so once I skipped, so there is an option for recognized organization. If you want your IELTS score to be directly sent to a particular college or something, you can ask them. The IELTS website you can do that for same. ये उस कंडीशन में होता है जब हम पहले ही अपना आइल्स का प्रोसेस चालू करते हैं, साथ साथ अपना स्टडी अब्रॉड का भी प्रोसेस चालू कर देते हैं. सो इसमें क्या होता है, वी गेट द कंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी,
जिस भी कंट्री जा रहे होते हैं उसके लिए। तो वो क्या करते हैं, हमें एक ऑफर लेटर दे देते हैं जिसमें हमारे आयल्स के बैंड्स मेंशन होते हैं कि हमें इतने बैंड्स करने हैं। सो दिस इज अगेन अ टिप फॉर यू गाइस। अगर आपका प्लान है कि मेरे को सितंबर में किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में जाना है, वहीं पे पढ़ाई करनी है, एंड तो आप अभी से ही विदाउट अपियरिंग फॉर आइल्स आप अपना कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस पहले दे देते हैं, राइट? सो यू कैन स्टार्ट योर स्टडी अब्रॉड जर्नी। डू नॉट वेस्ट एनी सिंगल डे, बिकॉज एक दिन में नहीं होती है जर्नी, इट टेक्स टाइम। सो इवन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ इफ यू विश, यू कैन कनेक्ट विद अस, वी कैन गाइड यू कैसे आप अप्लाई करेंगे। और उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि आपको आईएलटीएस में 6 पॉइंट चाहिए, 6.5 चाहिए, 7 चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स रिक्वायरमेंट। एंड फिर हम यहाँ पे उसको मेंशन कर देते हैं कि हमारा जैसे स्कोर आया आप डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी को भेज दीजिएगा। वो एक चीज तो वो ऑथेंटिकेट होता है, दूसरा आपको डबल वर्क नहीं करना पड़ता। ऐसे क्या होगा, आप खुद अपना टीआरएफ लेंगे एंड देन मैन्युअली आपको अपलोड करके वो यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ेगा, राइट? सो these are the options. Whatever you wish is correct for you, you can go with them, right? So I'm going to skip this section again. Now this is the review section in which whatever you have filled before, आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज आपको लगता है गलत है तो आप बैक जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट ऑप्शन यू गेट in order to make any edits. You can do it from here if you want to edit anything. Otherwise you can proceed to pay, and once you proceed to pay you get the options of, like, my test date is 17 Feb, the test city is Lucknow, test type is academic, this is my payment reference number, you need to note it down, and that is your test fee. So you can do online payment, like you can use Visa, Master wallets as well. So you can use net banking, you want to use wallets, whatever, debit card, credit card. So all the options. So you are getting the option of 2000 rupees cashback as well from the official IELTS website as of now. I'm not sure how long this is going to happen. So it is a good time to apply for this IELTS exam. And again, there are net banking options as well, powered by HSBC, powered by HDFC, powered by Razorpay. So generally, most of the banks do not charge you anything. They are, I believe, HSBC charge you like 150 rupees for the process. Apart from that, HDFC and Razorpay does not charge you anything. Or if you want to just fill out your form, and then you can also opt for pay later, like I'm applying for. So this is my registration details, right? I will pay my exam later. Fine. So that is it. That is how you need to fill this IELTS exam form. It is a very easy process. I hope it is clear to you, right? सबको क्लियर हो गया आइल्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या क्या उसमें डिटेल्स चाहिए, क्या क्या हमें भरना है? इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू आइल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। एंड वन मोर थिंग, जो भी वर्ल्ड एडेक्स से आइल्स का अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, वी आर गोइंग टू गिव यू लाइक बोट कंपनी का वायरलेस नेकबैंड्स है जो आपके लिसनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो भी हमारे इनिशियल कुछ बच्चे होंगे जो हमसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वी आर गोइंग टू गिव देम दैट, राइट? हम आपके एड्रेस पे उसको कुरियर कर देंगे यहाँ से। जिसको भी जो भी प्लान हो, लाइक नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक आपका जब भी आइल्स का डेट आपने सिलेक्ट करना हो, यू कैन सिलेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड एडेक्स, और यू कैन डू इट बाय योर ओन एज वेल। With WorldEdX, you will get the facilities like if you need to get anything updated, and WorldEdX will help you, right? So Adi, Neil, Saklen, Bilal, Rashna Tripathi, Urvashi, if any one of you have any question related to IELTS or how to fill the IELTS exam form, please feel free to ask me. Right. Anyone, please tell me if you have the passport or not. Everyone has the passport? Saklen, Bilal, Rashna, Neil, Adi. Yes, I have the passport. Okay, Neil. Okay, Saklen, also Neil. So So if you have any plan to fill your IELTS form, please let me know, because I believe today is the last date, जिस दिन 16,250 rupees है अभी एग्जाम फीस, परसों से 17,000 हो जाएगी। And also we are going to gift you that boat wireless neck bands which costs around, I believe, 2,000 rupees, and
if you have any interest, you can connect with me after this session and I can help you out in filling out the exam, right? And अभी जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया उसमें इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। जो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वो 1 MB से लेस होने चाहिए, 1 MB से ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट? और स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए रादर देन फोटो लिया हुआ। Okay. Any question you have, guys, related to this? I have a question from Rashna Tripathi that are you going to give some IELTS lessons also today? See, Rashna, हम डेली बेसिस पे लाइव सेशंस होते हैं, हम रोज कोई ना कोई टॉपिक उठाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? आज का जो सेशन था दैट वाज रिलेटेड टू IELTS रजिस्ट्रेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू IELTS, फील फ्री टू आस्क मी, मैं अभी आपको आंसर दे सकता हूँ। आज मेरे को जो टॉक करना था वो आपको फॉर्म फिल के लिए ही करना था, एंड नेक्स्ट वीक में मेरे पास स्पीकिंग टास्क के लिए थर्ड मतलब पार्ट 3 ऑफ स्पीकिंग सेक्शन का भी एक सेशन है, एंड ऑल्सो के आइल्स के लिए मिथ्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, कौन सा टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करें, कौन सा टेस्ट सेंटर ना सिलेक्ट करें, सो उसके भी सेशंस हैं। So you can ask me your questions related to particular module in the module session. Apart from that, if you have anything related to IELTS, you can feel free to ask me. I'm always happy to answer you guys. राइट? आप जितना ज्यादा मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, जितना तो बात करेंगे, आपकी नॉलेज भी क्लियर होगी और उतना इजी रहेगा। सही, मैं हमेशा बोलता हूँ आइल्स इज सिमिलर टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर हमें फॉर्मूलाज आते हैं ना, तो हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आइल्स का हमें फॉर्मेट और स्ट्रक्चर पता है ना, हम कुछ भी क्लियर कर सकते हैं बहुत इजीली। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड रूल नहीं है। बट मेक श्योर आप जो भी डेट सिलेक्ट करें बहुत श्योर होके सिलेक्ट करें, बिकॉज लाइफ में कभी भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। एंड आइल्स का एग्जाम अगर हमें पोस्टपोन या प्रीपोन कराना होता है या कैंसिल कराना होता है तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है जब आप अपने एंड से भरते हैं। वर्ल्ड के थ्रू भरोगे, सो वी विल गिव यू द लिबर्टी, और थोड़ा हेल्प भी कर देंगे हर चीज में, कैसे भी आपको गाइड कर देंगे, राइट? आइल्स का एग्जाम में एक चीज और ध्यान रखना, आपको कुछ भी चेंजेस कराने हैं एटलीस्ट 15 डेज का टाइम होना चाहिए। लास्ट 15 डेज में आपका ना एग्जाम कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, उसकी भी फीस बहुत ज्यादा हाई होगी। जितना आप जल्दी करोगे चीजें उतनी ज्यादा फीस आपकी। कैंसिलेशन पे रिफंड तो होता होगा ना? रिफंड होता है सकलेन, अगर 15 दिन पहले आप कैंसिल कर दोगे तो। तो 15 दिन के कौन? बाद, 15 दिन के बीच में कोई रिफंड नहीं है, और अपने चार्जेस और जीएसटी वगैरह काट के आपको रिफंड मिलता है। लाइक 16,000 का एग्जाम है, उसमें 13 साढ़े 13 हजार ही आता है आपके हाथ में। अच्छा, कंप्लीट फीस रिफंड नहीं होता? नहीं, कंप्लीट फीस नहीं, उसमें एडिशनल चार्जेस होते हैं ना यार। कंप्लीट फीस उनके पास भी नहीं जाती, जो उनको टैक्सेस वगैरह पे करने हैं वो स्टार्टिंग में ही पे कर देते हैं ना। आपको तो टोटल मिला के बताया जाता है सारा, आपको इसके साथ एडिशनल कुछ भी नहीं पे करना होता। 16,250 मीन 16,250, ऊपर 1 रुपया भी नहीं पे करना आपको, राइट? क्लियर है सबको रजिस्ट्रेशन का, आइल्स का? Neil, Rashna, Urvashi, Bilal, I believe you are the new students today. आदि, सकलैन, अदिति, कशिश, ये लोग तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, राइट? सो आपको भी कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज से रिलेटेड, प्लीज यू कैन आस्क मी। आप आइदर डायरेक्ट ऐसे सेशन में पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में अभी चाहें तो वैसे लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस देयर आल्सो, एंड वी विल आंसर यू। वी विल मेक श्योर कि आप पे हर क्वेरी का आंसर अच्छे से दिया जाए, राइट? सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड फॉर दिस सेशन। आई होप आपने कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर गेन की होगी, एंड यू कैन रिव्यू दिस सेशन ऑन यूट्यूब। ये लाइव भी चला है सेशन, एंड प्रीवियस 9 सेशंस भी लाइव थे हमारे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग अबाउट योर आईएलटीएस और इवन स्टडी अब्रॉड, किसी को भी स्टडी अब्रॉड के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज बता दें। मैं आपका फ्री काउंसलिंग सेशन कर सकता हूँ, 1-on-1 होगा वो सेशन। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कंट्री से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, आपका अपना पर्सनल बैकग्राउंड जो अभी तक चलता है, आपने क्या पढ़ाई की है, अकॉर्डिंगली आप कौन सी कंट्री जा सकते हैं, कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा, एंड वहां जाके आपको आरओआई कितना मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली चीज तो हम इंडियंस देखते हैं ना, हम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 8-10 लाख रुपए देके पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी कितनी की
नौकरी लगेगी और हम कितने टाइम में वो उसको सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट। सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है, कितना खर्चा होगा बाहर जाने में, कितना टाइम लगता है बाहर पहुंचने में, कैसे प्रोसेस होगा, स्टडी के बाद वर्क कैसे मिलेगा, वर्क वीजा कैसे मिलेगा, है ना, पोस्ट वीजा ऑपरेशंस भी आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। ओके बिलाल, फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, मेरा सेशन 1 था जो 9th को हुआ था, 9 जनवरी को यूट्यूब पे लाइव है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वीक में भी आई थिंक, अब मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ worldedex.com/IELTS प्रिपरेशन, उसमें सेशन के नेम्स लिखे हुए हैं और उसके अंदर एक ब्रीफ मैंने दे रखा है कि किस सेशन में मैं क्या बताऊंगा। तो राइट, तो जो भी सेशन हो आप उसके लिए अपने आप को अभी रजिस्टर कर लो, एंड दैट डे मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि आईएलटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। आई विल हेल्प यू आउट ऑन एवरीथिंग। ठीक है बिलाल, आज का सेशन मेरा रजिस्ट्रेशन का था तो मैंने उसके लिए आपको बता दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ अर्जेंसी है आपको, आप कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको कॉल कर लूँ, राइट। एंड देन वी कैन डिस्कस, और पूरी डिटेल में आपको सेशंस हैं उसमें आप एनरोल कर लीजिए, फिर आपको उसके हिसाब से गाइड कर दिया जाएगा, राइट। सो यही था मेरे एंड से। अब मैं बोल रहा था स्टडी अब्रॉड के लिए किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, वी हैव एक्सपर्ट्स, हर कंट्री का अलग से एक्सपर्ट है मेरे पास, हमारी कंपनी के पास। लाइक फॉर कनाडा, अगर आपका प्लान है कनाडा जाने के लिए स्टडी डेस्टिनेशन, आपको ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, आयरलैंड है, सिंगापुर है, यूके है, यूएसए है, फील फ्री, बिकॉज नॉलेज लेना, नॉलेज का कोई चार्ज नहीं होता है, वेरी ऑनेस्टली, राइट। और कितनी भी आप नॉलेज ले सकते हैं, एंड जब आपके पास करेक्ट नॉलेज होगी ना, करेक्ट गाइडेंस होगी, सो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। चार लोग आपको जो एक्सपर्ट नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाता है, बट रियलिटी डिफरेंट होती है सिर्फ बातों से। रियलिटी में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हमने जो पढ़ाई की है हमें आगे पढ़ाई, हमारे पास एक पाथ होना चाहिए, राइट। सो एक काउंसलर आपको उसमें हेल्प कर देगा, वेन एवर यू विश, लाइक आपका फ्री सेशन आपका कंडक्ट करवा सकता हूँ काउंसलिंग का फॉर स्टडी अब्रॉड। आइल्स के लिए आई एम द एक्सपर्ट, आप मुझसे कुछ भी चाहें, कैसा भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ओके बिलाल, जस्ट यू आर ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जस्ट ड्रॉप अ हाई, एंड ये क्वेश्चन आप सेम उसी ग्रुप में डाल दीजिए। आई विल मेक श्योर आपका एक फ्री काउंसलिंग सेशन आपसे बात करके कंडक्ट कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू योर टाइम, राइट। Just drop a message on our WhatsApp group, the same message what you have written in the chat box now, right? मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको कॉल अलॉट हो जाए, काउंसलर से आपका फ्री सेशन करवा दूं, राइट। सो कोई और भी हो ऐसे ही बचा, इफ यू वांट टू हैव द फ्री काउंसलिंग सेशन रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, मैं उसको कंडक्ट करवा सकता हूँ। इफ यू वांट टू हैव अ काउंसलिंग सेशन फॉर आईएलटीएस, आप वो भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको पर्सनल 15-20 मिनट्स जरूर दूं और आपके सारे डाउट्स आईएलटीएस के क्लियर कर दूं। Okay, so that was from my end for today's session. I hope सबने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर गेन की होगी। And now my next session is on 23rd of January. The session is related to the myths that are related to IELTS test and its testing locations. So we are going to discuss that on 23rd of January. And till then, bye bye guys. See you. Bye guys. बाय Bye, सर। sir. Bye Thank you Bilal. so Bye much. Satish. थैंक Bye. यू सर Bye. वेरी मच।